practice from today onwards. That I can assure all of you, all the participants. Now, with this brief introduction about the topic, let me first of all introduce our learned speaker of today's session, C.A. Shiv Bhagwan Asava. He is a CA of 1994 batch, DISA and forensic audit. And more than that, he has also done his executive MBA from IIM Kolkata. Now, this is our privilege to hear from his mouth about this particular topic. Who is IIM qualified, Indian Institute of Management, and CA. So, with those all these two qualifications together, can create lots of value addition for all of us. His specialization is raising of funds, particularly for MSME sector. He has helped to raise more than 10,000 crores, 10,000 crore in last 2 decades. My God, so good. 10,000 crore in last 2 decades. He does consultancy for designing of loan products, looking at business model of the enterprises. He also does economic viability audit for banks and promoters. He is also involved in consultancy for availing best possible rating from all reputed rating agencies. He has only given this brief introduction, but I know that he is well aware with this topic and maybe given lots of inputs to various professional institutes as well. And just now he shared that he is writing or compiling a book on DPR, a detailed book. I think we all will definitely be benefited by virtue of reading and understanding that book, that too with practical exposure of him, and simultaneously the kind of liberty we have to call him. He's ready to share his mobile number, and definitely means we can keep on disturbing him somehow to gain more and more knowledge. And being from our own fraternity, I definitely request you to, sir, that whenever our members will disturb you, please guide us so that we can also be benefited and get a new line, because we all are very much disturbed, or all are very much contained in our home, in our nest since last 3.5 months, and trying to somehow survive with this profession and survive our own office also. So with this brief introduction and little bit more insight of the subject, I would request to our learned speaker to take charge this session for the benefit of the participants. Thank you very much. Thank you. I humbly expect the way you appreciated. I am not that great. I am like one of you, came from very small village in West Bengal, and probably when I was doing my graduation, I was not knowing full form of CA. Frankly speaking, because very small village, hardly population of 500,000. Then I called up my uncle when I have done my graduation from Calcutta University. And then he told, you have got good numbers, and they used to see only numbers in mathematics. Rest of the thing, even if you failed, they don't mind. But in typical Marwari businessman, he said, भाई maths में कितना आया? तो मैं बोला भाई 93 आया. तो बोले फिर CA कर ले. Then I started searching about CA material. He told me, don't worry, you catch a train, come down to Mumbai. I will make your arrangement. So nice of him. And he put me in a hostel in Mulund. And from there, I started my journey to pursue chartered accountancy. Finally, in 94, I came around January 91. By 94, I became a chartered accountant. And first job I took up with a financial services company. That time, bankers were not that keen to appoint chartered accountant in their employee fold. I tried with institution, ICICI, IDBI, even ICICI Bank that time. First time, 94, they have converted their institution, and they have made it a public, private sector bank. And I remember I went to meet Chanda Kochar ma'am in Free Press Journal building, where he was AGM of ICICI Bank. And from that, I started with financial services, and I tried my hands with that time sell tax and all. But I found कि बस ये client के साथ time adjust करके ये सब करना है. It is not my cup of tea. हर चीज time bound करना है. I don't have any freedom. कोई urgency आ गई तो अपने को तो नहीं भाई. 31st अक्टूबर या 30th सितंबर जो भी ड्यू डेट है, ड्यू डेट में कंप्लाई करना है. इट्स बिकम लिटिल बॉदरसम फॉर मी.
Then slowly, by the time 2007 came, I completely exited from all conventional practice, and I concentrate only on financial services and management consultancy. But uh, during my path of practice, I joined with my partner, currently Girish Rathi, Bharat Sachdev, all my partners. So in case of I receive any audit assignment and all those things, I pass on to them. And in case they need any financial services things for their client, I handle them. But basically, it has to be give and take situation. And number one, number two, you should have a clear cut understanding with your either networking partner or actual partner. This is the model. So nobody is basic funda is if you first you need to make the cake, then you can think of eating the cake. तो केक बनाने के लिए सबका सहयोग लेना चाहिए, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे आपके फाइनेंशियल सर्विसेज हो. वो अगर मिलजुल के बनाओगे, मिलजुल के प्रोफेशनल फीस शेयर करोगे, तो थिंग्स becomes very big and your size of cake automatically becomes big. So I request everybody, if you this practice is not that tough, very easy things. After end of this lecture, you will understand these are not basic things. Even the pain you take for your GST or income tax, here your pain would be 1/10 of pain which you take for your income tax and GST, and your fees will be 10x of what you get in your GST and income tax. That I can assure you. So everybody should think about. Initially, you may have some kind of problem, but anyway, you can take. There are a number of chartered accountants who are into the service. You can call me, or you can know. You can call anybody who are into financial services. Take help of them. Share your fees. Even sometimes if you are getting less but gaining knowledge, that is welcome step. कभी हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरे को पैसा तो बहुत कम मिल रहा है, वो जो कर रहा है वो ज्यादा मिल रहा है. बट गेनिंग नॉलेज, दो चार काम आप किसी के साथ में मिलके कर लोगे, तो प्रोबेबली by the next 1-2 years you can have your own financial services practice. Everybody, I request those who are into conventional, your client needs your services. Only thing he is not aware of, or you are not tapping his requirement. If you can tap his requirement, then definitely every client, whoever has taken loan from financial institution or bank, need service of chartered accountant. Even I request people, those who are into conventional practice, भाई हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होता है वो टाइमली कंप्लायंस नहीं करता है, साल का एक सीए में डेटा बनाना पड़ता है, रिन्यूअल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, उसके स्टॉक ऑडिट में हेल्प रख सकता है, उसके बैलेंस शीट में वो टिपिकल मिस्टेक करता है, तो उसको गाइड करेंगे और बैंक के सैंक्शन में आप इन्वॉल्व होंगे, तो एक एनुअल फीस भी, रिकरिंग फीस भी अच्छा आ सकता है. Now with this I start my screen share, and we will go ahead. First we will go ahead with designing of loan. What are the points you must keep in mind before any designing of loan, or before giving any consultancy to your client, or even if you need, in your own case, if you need some borrowing. Many of chartered accountants have their family concern, so you should keep all those things in mind, so that your client get benefited, they get low cost borrowing, as well as they don't do any financial mismanagement. So with this, with your all permission, I start my sharing of screen, and we will go ahead. It's okay? Yes, sir. Okay. Basically, I have divided today's presentation in two sessions. First, we will look into designing of loan, or what are the points you must keep in mind while borrowing for your MSME client, or maybe little bit larger client or smaller client. What are the common mistakes generally people do? From my experience, I have noted down a couple of points we may discuss, or at the end of this today's presentation, we may keep a question answer session for 10-15 minutes.
फुल स्क्रीन कैसे हुआ? First, see if your clients have imports. There may be many of the clients who is importing from either from China or uh, South Asian countries or maybe US or Europe. Then generally, I have seen people are using vanilla cash credit or OD limits. I suggest if you have your clients having import, then you must take a buyer's credit. Buyer's credit today's scenario, it comes around 3 to 4% of rate of interest. Even if you don't have natural hedge by way of export, then go for hedging. Still, your borrowing cost will be not more than 8%. So it is cheaper than traditional borrowing of CC, which starts anything around 9 to 12, 13%. You can save 1 to 4% of your money. And buyer's credit, if you can do it as a sublimit of working capital facility. Suppose you are enjoying CC limits, then you ask your bank, give me sublimit by way of buyer's credit, so that generally what happens, bank suggests take buyer's credit as an independent limit, and then they will say कि भाई मैं एलसी इशू करूंगा, उसके लिए आपको कैश मार्जिन देना पड़ेगा. तो बायर्स क्रेडिट का पर्पज और कॉस्टिंग सेव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. देन यू सेव ओनली 0.5% or 0.25%. I will suggest whenever you are taking buyer's credit limit, take it as a sub limit of your working capital limits. If you don't have any DP problem, then it is always better to have sublimit of CC as a buyer's credit, and you can use that. Then you don't have to give any cash margin to your bank. So you will save your interest and interest cost. Now see, if you have imports as well as exports. Now export, there are certain products where RBI gives you interest subvention of 3%. HSN code wise, if your product, you can search through RBI website, or if you can check with your banker कि भाई हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट में करते हैं, whether मेरे को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. There are 3% interest subvention if you have taking packing credit. If interest subvention is there, then take packing credit in rupee terms. Don't go into dollar kind of things, because everybody managing dollar or foreign currency is not everybody's cup of tea. It is always better you take, if interest subvention is there, then packing credit in rupee. And if you wish to have term loan, or if you have a export receivable, then you can request your bank कि भाई मेरे को term loan जो है वो FCNR में दे दो, because FCNR will be costing around 3-4%, whereas term loan will be, normal term loan will be 9-10%. Even SMEs can. And always if you have exports, then and there is no interest subvention, say your product doesn't have any interest subvention, then you can take packing credit in foreign currency. That foreign currency, your interest cost will be again 3-4% only, and you have a natural hedge by way of export receivable. From your export receivable, you can pay off your foreign currency obligation, so that, and even if you have an import and then export, if foreign currency position is over a period of time, there is no mismatch, then you have a natural hedge. So you don't have to hedge your import, not all, and you don't have to hedge your export receivable also. And where interest subvention is there, why I said you must take packing credit in rupee, because then there is an option to sell your forward export receivable. You can see you have done exports in the month of July, current month, you know कि you will receive this money by September. तो सितंबर का फॉरेन करेंसी अगर आप बेच देते हो इसको, then you get a annualized premium of 3 to 5%. In extreme situation you get even more than 5%. जब डॉलर या यूरोपियन करेंसी, यूरो जब वोलाटाइल रहता है तो आपका फॉरवर्ड में प्रीमियम बढ़ जाता है. तो naturally if you have interest subvention of 3%, and if you are getting around 4% by way of say forward selling, then you are saving 7%, and in your packing credit in INR terms would be not more than say 8% or 8.5%. So laterally your interest cost is 1.5% or maximum 2%. Now
I told कि if you are importer as well as exporter, then generally what happens, people prefer कि भाई मेरे बाजू वाला बैंक ही हो जाए तो वो अच्छा है. But I suggest कि आपके client के अगर import export है और he is dealing with foreign currency, then you uh, must take your banking facilities with a forex branch of the bank, because what happens if you are dealing with local branch, he will take foreign currency rate whenever you want to mature your foreign currency or you want to remit foreign currency, then he will take rate from forex branch where probably treasury guy is sitting, and then he will convey it to you. You unnecessary, and there is documentation and all, then you fall into problem and delays. So whenever you are dealing with your client having import or exports or both and having foreign currency transaction, you see that your banking limits or even normal banking should be with a forex branch of bank. Now, one more catch which I found when in my practical life, कि जब आप इंपोर्ट करते हो तो जनरली ये नेशनलाइज बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ये परसेंटेज टर्म्स में डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस लगाते हैं 0.25% or card rate is 0.25%. Suppose your client is having import of 200 crores and your bank is charging 0.25% as document handling charges. Matlab you will pay 50 lakhs to your bank just to handle your documents. वो client को कई बार मालूम ही नहीं पड़ता. If you see any of your client having any imports and facilities from a nationalized bank, you will see that import document handling charges, but there must be import document transfer in percentage terms. ऐसे क्लाइंट है जिनके लिमिट्स है या बैंकिंग फैसिलिटीज है, इंपोर्ट्स है, आप सर्च करना, उनके देखना सैंक्शन लेटर, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस क्या है. कई बार डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ नहीं रहता. देन यू गो थ्रू हिज लेजर अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट, यू सी व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस दिस नेशनलाइज्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक इज लेविंग और हैंडलिंग इंपोर्ट डॉक्यूमेंट चार्जेस. मेरा तो सबसे बड़ा क्लाइंट जब आया था तो इसी कारण आया था कि उनके करीबन 450 करोड़ के इंपोर्ट थे एंड दे यूज्ड टू पे 0.125% with a nationalized bank, reputed nationalized bank, and their charges was 50 lakhs. I said कि I will first reduce these 50 lakhs into 5 lakhs, so I will help you to save 45 lakhs, and they happily took my service and paid me handsomely. So generally what happens if you advancedly negotiate with your private banks or nationalized bank, this import handling charges generally become 500 per document. And if you are even 1,000 documents in a year, which is next to impossible, ki every day on an average 3 documents, but say 200 documents in a year, then 500 rupees per document or even 750 rupees per document, hardly anything you are paying to bank. And another thing is that कि फॉरेन करेंसी जब कन्वर्जन करते हैं अपन, फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी करते हैं या लोकल करेंसी से फॉरेन करेंसी लेते हैं बैंक से. नहीं बोला. हेलो, हाँ हेलो, shall I continue? हाँ हेलो. Yes sir. Yes sir. Continue please. Okay. जनरली क्या होता है कि अपन जनरली बैंक के साथ नेगोशिएशन नहीं करते हैं. फॉरेन करेंसी आ रहा है बैंक से, अपन मैच्योर्ड करा लेते हैं, बट इस मैच्योरिटी में बैंक चार्जेस हेफ्टी प्रीमियम. इफ यू डू एडवांस नेगोशिएशन, आपका अगर साल में 50-100 करोड़ रुपए आ रहा है तो बैंक जनरली प्लस माइनस 1 से लेके 5 पैसे का रेट देता है. और आप अगर पहले से एडवांस नेगोशिएशन नहीं करोगे, इवन इफ यू डोंट हैव एनी लिमिट्स, बट फॉरेन करेंसी कन्वर्जन के लिए आप अपने बैंकर के साथ नेगोशिएशन कर लो कि जो उस टाइम बैंक का रेट है, इंटरबैंक रेट है, उससे आप कितना पैसा मेरे से प्रीमियम लोगे. 1 से 5 पैसा लोगे. आप अगर कभी कोई ब्रांच में विजिट करोगे, देखोगे एक डॉलर अपना फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का एक चार्ट, नियॉन साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है या नॉर्मल बोर्ड लगा हुआ रहता है. तो बाइंग और सेलिंग रेट में 5% की डिफरेंस होता है. डॉलर सपोज 70 है तो दे विल बाय एट 69 एंड दे विल सेल एट 71 और मे बी 69.50 और 70.50. तो 1 रुपया का डिफरेंस है.
If your client having import or export or both, if your client is dealing with foreign currency, then these conversion charges also should be negotiated upfront with bank. You will get very good rate depending on your volume of foreign currency. अगर 100 करोड़ के आसपास है तो even bankers will be ready to charge you only 1 paisa from your interbanking rate. Now अगर आपके पास अच्छा कोलेट्रल है, बैंकिंग के साथ आपके नॉर्मल लिमिट्स अच्छा है, तो देयर इज वन प्रोडक्ट कॉल्ड WCTL, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन. Generally it is for 1 to 3 months, but here rate of interest is generally 0.5% less than your normal interest rate they are levying on your working capital. Only hitch is that suppose they have given your WCDL for 90 days. On the 90th day, you have to mature the WCDL limit. You have to pay back, and from 91st day again you can draw WCDL limit. और समझ लो 30 दिन का WCDL है, तो आपको 30वें दिन उसको पे करना है, फर्स्ट डे वापस यू कैन यूज दैट WCDL. बट आपके बैंक में CC लिमिट के साथ उसका सब लिमिट एक WCDL पोर्शन, जो जनरली आपको प्रॉब्लम DP बेस्ड और आपका ड्राइंग पावर का अगर प्रॉब्लम नहीं है, 2 करोड़ का लिमिट है, तो कम से कम 50 लाख आप WCDL करके रखो, तो उसमें 0.5% सेव भी होगी. तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर सेविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी for your client or for your own self. And even if your bank has FCNR limits, then you can request your bank कि भाई मेरे को CC का पार्ट लिमिट FCNR B लिमिट में शिफ्ट कर दो. अभी कुछ क्लाइंट आपके होंगे जो सप्लाईज कर रहे हैं रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे हिंदुस्तान लीवर, ITC, फाइजर, ONGC, रिलायंस, L&T. There are n number of big corporate clients. They have tie-up with their banks for channel funding and all. And generally I have seen these biggies कि बोलते हैं their payment term से 30 days है या 45 days है, 60 days है. If you wish to take payment within 7 days, they will say कि भाई हम 1.5% और 2% कैश डिस्काउंट आप भी ऑफर करते हो, तो 2% कैश डिस्काउंट काट के आपको वो पैसा दे देते हैं. 2% cash discount means you are paying him 24%. But these reputed organizations, even your bankers will be ready to discount those bills. You should have bill discounting limits. You can speak to your banker. They will discount it even at, I have written 10 to 12%, but this is higher. Generally, if your client is biggies, then they basically discount those bills 90% payment they give you upfront by hardly prime lending rate, which may be around 7.5% to 9%. So there is no point offering even 1%, 1.5% or 2% discount to your buyer taking cash payment. Instead of that, you don't take cash payment, you discount those bills with your bank. They will happy to discount those deals. Suppose there are certain times you will find that your client needs money, drawing power बैठता नहीं है. Suppose उसका टर्नओवर है 5 करोड़, उसका 2 करोड़ का लिमिट है और या 3 करोड़ का लिमिट है, ड्राइंग पावर बैठता नहीं है. फिर वो स्टॉक और बुक डेट्स का एडजस्टमेंट करके वो बैंक को देता है. फिर स्टॉक ऑडिट आती है, उस टाइम प्रॉब्लम आता है. एंड टेक्निकली ये इशू से आपका अकाउंट NPA भी हो सकता है अगर आपका DP से ज़्यादा लिमिट ड्राइंग कर रहे हो. इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड कोलेट्रल, your account may become NPA because you are drawing consistently or your account is overdrawn compared to your DP. Then you speak to your bank. Instead of doing some adjustment in stock and book debt statement, ask your bank कि भाई मेरे को CC से हटा के some part of limit, जितना DP बैठता है उतना CC ले लीजिए, some part of limit convert into OD limits. हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, अभी just now we have done one facilities for a ज्वेलरी क्लाइंट. कोलेट्रल बहुत अच्छा है, 5 करोड़ का क्लाइंट है, 5 करोड़ का कोलेट्रल है, बट उसका बैंक का रिक्वायरमेंट है कि टू एबल 5 करोड़ लिमिट, बोले हम आपका कम से कम 25-30 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए. एंड यू नो ज्वेलरी बिजनेस में बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी बहुत कम होता है, बिकॉज सर्टेन टाइम्स
there are barter transaction, because people buying gold or jewelry bring old jewelry and take new jewelry, then his bankable transaction is very less. तो बैंक से टर्नओवर घूमता नहीं, फिर बैंक परेशान करता है. द क्लाइंट केम टू मी, बोलो दिस इज द प्रॉब्लम. व्हाट आई हैव डन, उसको मैंने सीसी लिमिट बंद करा के ड्रॉप लाइन ओडी करा दिया प्राइवेट बैंक में. मैं बोला आप पैसा भी कुछ भी यूज करो, बैंक को आपको ना तो स्टॉक देना है, बुक डेट स्टेटमेंट देना है, ना एनुअलाइज स्टॉक ऑडिट करानी है, ना रिन्यूअल करना, ऑटो रिन्यूअल मोड में 10 साल के लिए ओडी फैसिलिटीज कर दिया है. एंड ही इज हैप्पी. बोले चलो अभी अब मेरे को ये कोई हेडेक नहीं है, टर्नओवर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग their interest and installment, absolutely no problem. So if you have client having good collateral, then you must take and having DP issues, then you should advise your client, or you should negotiate with bank ki bhai without linking DP you must have some kind of limit, so that you don't have to do any kind of adjustment to your stock and book date statement. Now many of your clients, you will see if you go through blank कि भाई creditor अगर उधार देता है तो हंसी खुशी वो उधार लेता है, बोले यार मेरे को तो उधार मिल रहा है, मैं क्यों नहीं लूं. बट कभी भी ध्यान रखो, उधार कोई फोकट में नहीं आता है. उधार के लिए आप सप्लायर्स कोई कैश पेमेंट करता है और कोई क्रेडिट में लेता है, तो जनरली सप्लायर्स विल चार्ज यू 2 to 3% पर मंथ. उसकी प्राइसिंग उसी तरह से ही होता है. I have seen many of my clients, अभी तो एजुकेट करते रहता हूँ कि पैसा है, लिमिट्स है, या पोजीशन ठीक है, फिर भी अगर सप्लायर उधार दे रहा है तो उधार लेता है 60 दिन का 90 दिन का, बोले यार ये देता है. बट नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट. इट योर सप्लायर्स charge you 2 to 3%, load that pricing things, load in that cost in your pricing, and accordingly they supply. I will suggest कि आपका कोई क्लाइंट का कैश पोजीशन अच्छा है, कोलेटरल है, सप्लायर्स को कैश पेमेंट देने के लिए आप बैंक से लिमिट ले लो. बैंक लिमिट देगी 9 से 10% में, एंड सप्लायर्स को बोलो भैया आप माल सप्लाई करो, मेरा क्यूसी अप्रूव हो गया, इमीडिएट पेमेंट ले जाओ. एंड सप्लायर्स विल in fact they will give you discount of 2 to 3%, which is 24 to 36% annum, and whereas you will be paying bank 9-10%. तो ऐसा भी कैसे होता है कि there are clients who is averse to take bank loan, but you suggest them कि भाई बैंक लोन लेके रख लो और आपके पास आपकी फिनेंशियल पोजीशन ठीक है, बट आप सप्लायर्स का पैसा इमीडिएटली पे कर दो और उससे कैश डिस्काउंट लो, तो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में भी एक अच्छा पैसा इनकम हो सकती है, आपका अच्छा पैसा सेव हो सकता है. नाउ अनदर प्रॉब्लम आई हैव सीन दैट जनरली इफ यू हैव कंफर्टेबल वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, और आपको सपोज 10 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लिमिट्स है, जनरली आप 7-8 करोड़ यूज करते हो, और आपका एक रिक्वायरमेंट आ गया कि थोड़ा एक नया मशीन लेना है या बिल्डिंग में कैपेक्स करना है 3-4 करोड़, आप सोचते हो यार हर महीना इंस्टॉलमेंट कौन पे करेगा, जाने दो, अपन सीसी में तो पड़ा ही है खाली पैसा, अपन यूज कर लेते. ये गलती कभी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज वंस एज ए ऑडिटर probably if it is a corporate client, then you have to give your comments. There is short term money should not be used for long term use, long term purpose. दूसरा ये कभी कभार this creates huge problem going forward. Sometimes I have seen even we having good business model, good profitability margin, corporates or enterprises have collapsed due to this, because automatically जैसे अभी ये इमरजेंसी सिचुएशन आई है पैंडेमिक, अगर आपका वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी से आपने कैपेक्स यूज कर लिया, देन यू गेट हिट वेरी हार्ड, बिकॉज जब आपकी वर्किंग कैपिटल पैसे की जरूरत होगी, डेटर से पैसा नहीं आ रहा है, या आपके इन्वेंट्री ब्लॉक होगी, नया सेल्स नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, और आपने वर्किंग कैपिटल का पैसा अगर कैपेक्स के लिए यूज किया, देन यू फॉल इनटू अननेसेसरी ट्रैप. तो आपके क्लाइंट अगर इवन स्मॉलर अमाउंट भी कैपेक्स कर रहा है, तो उसको बोलो या तो आपके पास सफिशिएंट इक्विटी है, आपका खुद का पैसा है तो कर लो, अदरवाइज यू आस्क योर बैंक टू गिव टर्म लोन फॉर 5-7 डिपेंडिंग ऑन योर कैश फ्लो. आप बैंक से टर्म लोन ले लो, दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन. And nowadays one more problem which is visible, every bank started levying giving one condition
if you switch over to any bank, we will levy prepayment penalty charges, it ranging from 2% to 6%. I have seen one sanction letter where prepayment penalty charges is 6%. Even cooperative banks, private banks, nationalized bank, they have started this practice. Though RBI has given a circular, but RBI circular restricted to individual borrower, that too also housing loan. Housing loan आप switch करते हो तो कोई prepayment penalty charges नहीं है. Otherwise, any other things. But practically speaking, working capital limits is for 1 year, and there should not be any prepayment penalty charges. But bankers लेविज इट, सैंक्शन लेटर में 27वां नंबर पॉइंट पे वो लिखा हुआ रहता है, कोई ध्यान भी नहीं देता है. क्लाइंट भी घाई घाई में रहता है, चलो यार पैसा मिल रहा है, सैंक्शन लेटर एक्सेप्ट कर लेता है. बट बहुत बार हमको ऐसा होता है कि भाई कोऑपरेटिव बैंक से 12-13% में लोन ले रखा है, एंड प्राइवेट बैंक इज रेडी टू गिव एट 9-10%, बट ही कैन नॉट स्विच ओवर बिकॉज 10 करोड़ के ऊपर बैंक ने बोला हम तो 40 लाख प्रीपेमेंट पेनल्टी चार्जेस लगाएंगे. तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, for your client, any sanction letter comes, you should must see these clauses and ask your client, or on behalf of client you must negotiate with bank कि भाई हम sanction letter accept नहीं कर सकते unless you remove this clause. Because क्या होता है, बैंक के लिए क्लाइंट को withheld करने के लिए ये कैरेट एंड स्टिक, तो स्टिक अप्रोच है कि भाई आप जाओगे तो ठीक है, हमको 40 लाख रुपए दे के जाओ 10 करोड़ के लिमिट में, फिर आपको जो बैंक में जाना है वो जाओ. एंड जनरली बैंक नेगोशिएट भी करता है, 1-8% कोई कम भी कर देता है. एंड आप आपको सस्ता पैसा. अच्छा, कई बार क्या होता है कि बैंक डजंट एनहांस योर लिमिट. से आपको 4-5 करोड़ का लिमिट है, आपको 7 करोड़ का लिमिट चाहिए और सफिशिएंट कोलेटरल भी दे रखा है, बट ये बैंक एनहांस नहीं कर रहा है, तो आपको एनहांसमेंट के साथ कहीं दूसरे बैंक में जाना है, डिजायर लिमिट के लिए जाना है, बट ये प्री पेमेंट पेनल्टी चार्जेस बिकम hindrance for you to switch over to a new bank. So I request everybody, whenever you get any sanction letter of bank, invariably there will be this clause, you must negotiate with bank before accepting sanction letter. Once you accept the sanction letter, then there is no point, then आपको वो फाइनली 2% तो मिनिमम पे करना ही पड़ता है, and sometimes it become huge cost. That's why we can remember, you don't get what you have, but you get what you negotiate. So negotiation, you must be one of the negotiator on behalf of your client for dealing with bank facilities. Now I probably I will go for this preparation of project financials, and at the end of this we will have question answer session. Is it okay, Bhujwal sir? Hello? Yes, sir. We can go ahead. Okay. Now, what I have done, I will be preparing one live project report in front of you in Excel sheet. Project का जो details है, वो मैंने एक Word file में बनाया है. All those files will be shared with you through New Bombay branch so that you can go through those things. Only thing that Excel sheet will be data protected. You will be able to see all data protect. Only thing is that you cannot change it because all those cells will be locked. But that will enough for you to prepare any project financial, understanding how to prepare it. And even those steps which I am mentioning now will help you to prepare any sort of financial statement. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पहला स्टेप रहता है, आई विल गो टू एक्सेल शीट ऑल्टरनेटिवली. यू हैव टू फर्स्ट गेट डिटेल्स कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम योर क्लाइंट. वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वाली शीट आप फिलअप कर लीजिए. उसमें अप टू टिल मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल छोड़ के बाकी आप सब फिलअप कर लीजिए. देखिए मैं करूंगा अभी. गिव मी 1 मिनट. दिस ऑल टैब में लेता हूँ.
this वापस वो ऑल्ट टैब वाला प्रॉब्लम हो रहा है नीचे क्लिक करो ना कहां इसमें जाना है पीपीटी एक्सेल वर्ड तो ये पीपीटी इधर था एक्सेल नहीं बट योर स्क्रीन शेयरिंग ये क्यों सिलेक्ट करते हो बार बार पूरा स्क्रीन सिलेक्ट करो ना अब जब भी देखोगे तो पूरा दिखेगा अनम्यूट कर रहा हूं अनम्यूट था ही नहीं okay now fantastic now I have taken one hypothetical project report ki ABC India Limited decided to set up manufacturing facility to manufacture sanitizer and liquid soap at Thane TTC, New Bombay. And this is his project cost. So land and site development, building. Now remember I have told you that first step is fill the sheet, project cost of project up to except margin money for working capital. So let's go to the project report. And this is the details I have. For easy sake, land and site development 3 crore, building and civil work 3 crore, plant and machinery 1 crore, miscellaneous expenses, miscellaneous fixed asset 1 crore, pre-operative expenses 50 lakhs and contingency will be 5% of project cost, non-farm portion. Non-farm portion मतलब जिसका cost अभी तक finalize नहीं हुआ, you are negotiating with your supplier, you have estimated कि भाई ये cost आएगा, तो कभी भी contingency का provision रखना चाहिए because if there is overrun to your project cost, bankers will have a typical sanction terms that any overrun to be borne by promoters. तो इसलिए contingency भी provision रखना चाहिए. Now you see what I have done. I've taken land and site development 3 crores, building and civil work, let me make it 3 crores. Now plant and machinery 10 crore, miscellaneous fixed asset 1 crore, pre-operative 0.50 lakhs. So this is my step 1 as per presentation. I have said that up to you fill up those cost of projects and then means of finance and contingency table except margin money for working capital. So what I have done now, once your cost of project is done, khali this margin money for working capital will come automatically. I will show you how it comes, but then you do means of finance. Means of finance generally it depends on किस तरह का बैंक एग्री करता है. जनरली 75% ऑफ योर प्रोजेक्ट एसेट बैंकर्स फंड एंड बहुत सारे टाइम नेशनलाइज्ड बैंक बोलता है कि लैंड एंड बिल्डिंग का 60% देंगे एंड 75% ऑफ मशीनरी देंगे. तो उस हिसाब से यू डिजाइन की कितना टर्म लोन अपने को मिलना चाहिए. इन दिस केस व्हाट आई हैव डन कि लैंड एंड बिल्डिंग का 60% लिया हूँ, प्लांट एंड मशीनरी मिसलेनियस फिक्स एसेट्स का मैंने 75% लिया. अकॉर्डिंगली आई अराइव दैट कि मेरा 12.39 वुड बी एलिजिबल टर्म लोन. एंड प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन आई ऑलवेज सजेस्ट कि कई बार क्या होता है कि अपन पूरा का पूरा एज ए कैपिटल दिखा देते हैं. बैंकर्स आल्सो प्रेफर्स कि मींस ऑफ फाइनेंस में पूरा कैपिटल ही होना चाहिए. आई सजेस्ट कि थोड़ा बहुत अनसिक्योर्ड लोन बाय ऑफ क्वासी सिक्योरिटी आना चाहिए. पैसा समझ लो पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स कैपिटल के जगह थोड़ा बहुत अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम पार्टनर्स आना चाहिए. बिकॉज क्या होता है कि अभी आपका फंड फ्लो अच्छा हो गया तो आपको अगर पैसा पार्टनर्स को वापस देना है तो अनसिक्योर्ड लोन यू कैन पे बैक. इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यू कैन नॉट पे कैपिटल. You can give them salary or dividend or all those things. That is costly affairs. There you have to pay tax. So some portion of your means of finance should be by your quasi equity. So that कभी कैश फ्लो फंड फ्लो अच्छा है आप पे कर सकते हो तो बैंकर्स ऑल्सो गिव्स यू परमिशन. तो अगर क्वासी इक्विटी रहती है तो आपको पे करने में लिए आसान हो जाता है. तो आई हैव इन दिस केस आई हैव डिसाइडेड कि भाई टोटल जो बैलेंस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ऑलमोस्ट 50-50% बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल और 50% बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड क्वासी इक्विटी लेंगे. नाउ स्टेप 1 में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया, मीन्स ऑफ फाइनेंस हो गया एंड सेकेंड शीट आई हैव प्रिपेयर्ड is contingency. Simple.
if see, in my case, this case, I have assumed that land is already purchased, so there is no contingency now. 3 करोड़ में आपने परचेज कर लिया तो वो पकड़ लिया फार्म कॉस्ट में. बाकी नॉन फार्म कॉस्ट में आई हैव एडेड कि आई हैव टेकन 5% as contingency. You can change it, you can make it 2%, 3%, but at the end of the session you will find that I have made this sheet so dynamic. Any changes you do, there will be automatically changes in every sheet, and your project report will be every permutation combination. You don't have any issue because that dynamic project report is so dynamic, sheet is so dynamic that any changes you made, nothing will change. Your balance sheet will get tallied every time, and every time you can see your changes in debt service coverage ratio or all those things, so you don't have any issue. तो आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट कोई बैंकर के लिए प्रिपेयर करना है या प्रोमोटर के लिए प्रिपेयर करना है या इवैल्यूएशन करना है. अभी बहुत सारी आपके क्लाइंट को हो सकता है किसी ने बोला अरे ये प्रोजेक्ट में जाओ, ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है, तो आप एक्सेल शीट में उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को उतारो, इस तरह का एक डायनामिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, एंड फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको कैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस करनी है. भाई जो की एलिमेंट है, चाहे रॉ मटेरियल है या इलेक्ट्रिसिटी है या सेलिंग प्राइस है, तो आप कम बेसी करके दे सकते हो. भाई 5% रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा दो, 5% सेलिंग प्राइस कम कर दो, तो मेरे प्रोजेक्ट में ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है. तो यू कैन सी you can see those differences, what is the effect on the project, sensitivity of project, and accordingly you can advise your client कि भाई इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. क्या वर्बली कोई क्लाइंट बोलता है भाई इस तरह का पैसा इन्वेस्ट करो, आपको इतना पैसा छूटेगा, इट्स ए गुड रिटर्न, IRR 20% or 30%, but once you put down on an Excel sheet and do sensitivity analysis, then you become comfortable. Yes, in real sense, अगर 5-10% का कुछ वेरिएशन भी आता है तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनेगा. प्रोजेक्ट कैन सस्टेन. इसका ब्रेक इवन एनालिसिस करके आप देख लोगे. तो दिस गिव्स यू एनफ कॉन्फिडेंस कि यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है. इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने एक सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए ही बनाई थी, वो क्लाइंट ने बना भी लिया है. उन्होंने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग मशीन बनाया, उनको किसी ने आइडिया दिया टेक्नोक्रेट ने. जब हमने एक्सेल शीट पे बनाया और सारा सेंसिटिविटी एनालिसिस करके देखा तो अपने को लगा कि नहीं ये प्रोजेक्ट वायबल है. एंड फिर मैंने मेरे क्लाइंट को एडवाइस किया, यस यू कैन गो अहेड विद दिस. I have done sensitivity analysis. I have submitted him sensitivity analysis report because he was putting almost 1 crore of rupees with because of advice given by technocrat. तो कभी कुछ प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगा तो 1 करोड़ रुपया डूबने का खतरा है. तो he was ready to pay my fees, but बोला आप एक sensitivity analysis economic viability report बनाओ तो so that I can put money in this project. Once I prepared, he becomes comfortable, then he started, and already they have started manufacturing automatic dispensing sanitizer dispensing machine. Now, once calculation of contingency is done, I have arrived at what is my contingency, 73 lakhs. That become part of my project cost. Now, except these 3 sheets are ready, cost of project is ready, means of finance we have already decided. I have given formula कि भाई लैंड एंड साइट डेवलपमेंट बिल्डिंग का 60% मिलेगा और प्लांट एंड मशीनरी मिसलेनियस फिक्स एसेट इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी का 75%. बेस्ड ऑन दैट आई हैव अराइव्ड एट व्हाट काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ टर्म लोन I have, and rest of the things has to be pumped in by promoters. I have taken promoters contribution and I have completed this contingency sheet. If you now go, what is my step 2? Step 2 is there is one statement called complete the production and sales statement, which you will arrive at sales figure, which you will go to working results. So let's go to the production and sales statement. This sheet I will be sharing you. Now one statement I have prepared, this is called estimation of production and sales. You see the headlines. Now here I have details from my client, ki what will be my install capacity. If you see, this is production details. He has given me sanitizer 1 lakh liter, annual capacity 12 lakh liter, liquid soap 2 lakh liter per month, annual capacity 24,
and capacity utilization approximately first year 60, 70, 80, and thereafter 5% price volume growth. All those details I have taken from the technical guy or from the promoter who knows भाई मेरा कितना capacity है, क्या बन सकता है. And I prepared this sheet called estimation of production and sales. I have taken sanitizer capacity 1 lakh per month, 12 lakhs, and liquid soap 2 lakhs per month. And assuming that production will start in April 21, so I have taken 300 days of production, weekly one off. This can be changed depending on there may be continuous project where there may be not more than 10-15 holidays like Diwali, Holi and all. Here that you have to change. 300 की जगह 350 भी हो सकता है. तो और ये पूरा हो सकता है पहला साल बीच में चालू हो रहा है तो आपको 300 के जगह 225 डेज 9 मंथ्स का मिल रहा है या 6 मंथ्स का मिल रहा है. जो भी मिल रहा है बेस्ड ऑन दैट दिस estimation of production and sales sheet has to be completed. Now I have arrived at कि भाई 3 शिफ्ट है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 3, तो सब ऑल फॉर्मूला दिया हुआ है. एस्टिमेटेड प्रोडक्शन पर डे, एस्टिमेटेड एनुअल प्रोडक्शन. I have taken capacity utilization 50, 60, 70, though it can be changed in my assume 60, 70, 80. So let I change it 60, 70 and 80. Automatically every figure get changed. I have got this detail कि भाई average selling price for sanitizer will be 500 rupees liter and liquid safe 600 liter. Based on that, arrived at कि what will be my annual sales on basis. I have got this figure of annual sales 102, 142 and 163 because of capacity utilization. Now these basic these are normal sheets for any kind of project report preparation. This you have to arrive there because for working anything you do, your banker will ask you कि भाई आपका sales figure आपने कैसे पकड़ा, इतना ही क्यों होगा, कम बेसी होगा. तो these are basically detailed sheet so that I can सबमिट कंफर्टेबली बैंक की भाई मेरा इंस्टॉल कैपेसिटी इतना है, इतना एवरेज सेलिंग प्राइस है, इतना मैं बनाऊंगा, इतना मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है. एंड यू गेट ए डिटेल्स बैकग्राउंड वर्किंग ऑफ योर सेल्स फिगर. दिस once this sheet is completed, this sales in project report preparation, generally if you typical proprietorship concern or partnership firm, you divide your profit and loss account in two parts. One is trading account if it's a trader, and another is profit and loss account. In project financial terminology is one is cost of production, another sheet is estimates of working results. So from these sheets, I have prepared estimation of working results. These figures will go to working result sheet as a sales figure. I'll show you. Now this is estimates of working results, and I have taken those sales figure from my sheet of estimation of production and sales. If you see, I have taken this figure 102, 142 and once this sales is done, now see what next step is. Complete the production sales statement. You arrived at sales figure which will go to working result sheets. Now complete the cost of production sheet. Let's go to cost of production sheet. This is my estimates of cost of production. Based on production sales statement, I know annually what kind of production I'll be making, and I have taken details by मेरा cost of production में क्या क्या खर्चा आएगा. तो this summary I am sharing. This word में क्या बोल रहा है? Raw material cost would be 340 per liter produce, and soap 450 liter, store space, packing material, power and fuel, labor cost, supervisor cost, insurance and taxes क्या लगेगा, other factory overheads क्या होगा. Based on these inputs received from your client, you have prepared this cost of production sheet. I have taken, if you see the formula, I have taken 350 and 450 for sanitizer as well as soap, and these have been given link. जो मेरा production है, if you see this BL25 into 350. So BL25 is, again, if you see, my annual production figure is from here BL25. That figure multiplied by 350 and this figure multiplied by 450, I have arrived at
what kind of raw material cost I will have. There may be different things, but somehow you have to link with your sales. It may be percentage terms, you may be separate calculation, so that if you change your sales figure or if you do any changes in your figure, तो दिस शुड गेट ऑटोमेटिकली चेंज. नहीं तो क्या है, हर बार आप चेंज करोगे, हर बार आपको डिटेल्स ढूंढना पड़ेगा. इससे अच्छा लिंक कर दिया सो दैट आप इसको मैं 350 की जगह, कल क्लाइंट ने बोला सेंसिटिविटी एनालिसिस करके इसको 400 बना दो, तो यहाँ मैं 400 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्किंग रिजल्ट सब चेंज हो जाएगा. That's why it has to be dynamic. Now, based on my input, I have taken 50 rupees for stores and spare cost and 10 rupees for my packing material cost. Power and utility, it was 10 lakhs first year, second year 11, third year 12. Based on that, I have taken 1.2, then 10% increment. Labor overheads, working kitna mera. If you see this project details, they have said that there will be 50 labor, 10,000 per month into 12 months. Based on that, I have arrived at what I have to pay to my workers, what I have to pay to my supervisor, 30,000 salary. These figures, basically what I mean to say कि every figure, whatever you are arrived at, there should be some backward calculation sheet readily available so that you can explain to your banker भाई ये figure आपने कैसे लिया है. और अगर इस तरह का सीधा सीधा फिगर है तो there will be one more sheet called assumptions. You should put how you have arrived at labor overheads. So all assumptions should be given there. So banker has to go through those assumptions to clearly understand project details. Now factory overheads, I have decided 0.5% of my project cost or fixed asset cost is by way of insurance, and other factory overheads I have taken 7 lakhs, 8 lakhs and 9 lakhs as per input given. These things can be changed, but basic object here is to learn how to prepare project report. Based on input, these formulas, this linking can be changed, but you have to arrive at this kind of direct cost, and based on that you will get your estimated cost of production. Once this estimate cost of production is done, then you have to go to working results till operating profit. What I have done from this cost of production, I have taken in my working result sheets, formula is given this cost of production. First 3 years I have worked out, and second year onwards, there I have taken 102% is my inflation cost. It can be changed. I think in my project details I have taken 5%, so I can make it 105%, and based on that, all I have changed the formula कि भाई मेरा सालों साल तीसरे साल के बाद हर साल 5% से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बिकॉज मेरे को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा लेबर को, रॉ मटेरियल में भी इन्फ्लेशन आता है. तो करस्पॉन्डेंटली यू हैव टू चेंज योर सेल प्राइस बाय 5% और 4% और 6%, वट एवर वे यू वांट टू डू. तो ये मैंने 5% जो प्रोजेक्ट डिटेल्स में था उस हिसाब से ले लिया. देन दीज आर द सैलरीज. you must do all those assumption कि भी साल का 60 लाख रुपए क्यों लगेगा. जनरली जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में 10% इंक्रीमेंटल लेना चाहिए, तो मैंने वो ले लिया है. Then there is a provision for director's remuneration. I have taken that provision. Then other administrative overhead like telephone, stationery and all those things, I have taken this assumption. Then total administrative cost. My client has given me my selling and distribution cost would be including commission 5% will be my selling and distribution cost. अभी मैंने जैसे यान मार्केट में मैं कोई टेक्सटाइल कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बना रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा 1.5% कमीशन है और आधा % दूसरा कॉस्ट है. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली 2% of my sales. So it can be 2%, it can be 5%, it can be 10%. Basic input you have to take from your client to arrive at selling and distribution cost. So I have taken in this scenario 5% of sales is my selling and distribution cost. You see all those things have been directly given formula, sales into 5%. Sales I have already taken from estimated cost of production, estimates of production sales. First 3 years sales were there. Now, since your production cost is increasing by 5%, I am assuming that my sales price, to compensate this, I will increase my sales price by 5% every year. And based on that, I have arrived at
what will be my 4th, 5th, 6th, 7th, 8th year sales. Generally projection should be depending on आपका बैंक आपको बोलता है जो टर्म लोन का रिपेमेंट पीरियड है, डोर टू डोर रिपेमेंट पीरियड है, उतने साल तक का प्रोजेक्शंस बैंक को चाहिएगा. मैं इन दिस केस आई हैव डिसाइडेड कि भाई 1 साल का मोरेटोरियम, 7 साल का टर्म लोन, तो 8 साल का डोर टू डोर हो गया, तो प्रोजेक्शन 8 साल का. जिस साल तक टर्म लोन चलेगा उस साल तक का प्रोजेक्शंस आपको बैंक को बना के देना पड़ता है. Now based on that I have come up to operating profit. Here you have to stop वर्किंग रिजल्ट्स में. आपको उसके बाद आपको एक मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल बनानी पड़ेगी. आई विल शो यू हाउ टू प्रिपेयर. आई विल शो यू व्हाट इज द स्टेप्स रिटन ओवर मी. कंप्लीट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट द वर्किंग रिजल्ट्स अप टू सेल्स. Now complete the term loan chart to arrive at interest and repayment. Okay, and complete the working model. Okay, first we do term loan chart. Now up to sales and then operating profit I have arrived at. Now I have to means of finance से मुझे मालूम है मैं कितना term loan ले रहा हूँ, तो term loan का एक repayment chart बनाना जरूरी है. I have prepared one sheet called term loan repayment schedule. I will show you that sheet. See, interest and repayment of term loan. I have assumed that there will be moratorium of 1 year and 6 years of repayment. This can be changed because of DSCR. So repayment even may be ballooning, or there may be some kind of changes, but based on your discussion with client and bank and based on cash flow, you have to design this term loan. अभी ऐसा हुआ था, एक मैंने स्कूल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैंक्शन कराया, तो ओरिजिनली जो सैंक्शन उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट किया था, उन्होंने रिपेमेंट किया 5 साल, 1 साल का मॉरेटोरियम और 5 साल में रिपेमेंट दिखाया. जनरली इस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस आई सेड कि बॉस 5-6 साल में आपका रेवेन्यू रिपेमेंट हो नहीं सकता, इतना कैश फ्लो जनरेट नहीं होता है. स्कूल इज बिट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो आपको बैंक के साथ बात करनी पड़ेगी, और नहीं तो अननेसरी अकाउंट बीच में रिस्ट्रक्चरिंग होगा. अगर मिसमैचिंग होगा कैश फ्लो एंड रिपेमेंट, तो बैंकर विल टेल कि भाई आपका ओवरड्यू हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं कर पाओगे, तो अननेसरी अकाउंट एनपीए होने के चांसेस है या रिस्ट्रक्चरिंग करने का चांसेस है. वंस you do your restructuring of account, your borrowing cost got reduced. तो रीपेमेंट शेड्यूल डे 1 पे अपने को जो कंफर्टेबल है उस हिसाब से करना चाहिए, और बैंक से वही नेगोशिएट करके वही कर लेना चाहिए, सो दैट इन बिटवीन यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन. In this case, I have assumed that repayment schedule 1 year of moratorium till your commercial production and sales, actual sales get start. You should must have moratorium period. और मोरेटोरियम पीरियड तक का जितना इंटरेस्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में आ जाना चाहिए बाय वे ऑफ प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस. I have assumed, see here what I have done, I have taken this, I have given this link to my means of finance. Therefrom I get this figure of 12.39. I have assumed my quarterly repayment schedule and 10% interest rate. Based on that, first year I have decided not to repay anything, and second year onwards what I have done, quarterly installment. It can be monthly installment, but in our case I have taken quarterly installment. तो 6 साल में repayment करना है, principal divided by 24, I get my quarterly installment, and interest calculation automatically principal get every quarter reduced, then interest component gets reduced. From once you prepare this chart, then I can have interest on term loan chart, interest on term loan figure ready, which I will be required to put in my working results. If you see estimates of my working results, I will show you. See, we have come up to operating profit level, then financial expenses, interest of term loan. This term loan figure interest from my term loan chart, I have taken this, and I have given projection till 8th year, because their term loan interest becoming 0, all those things getting repayment. From that chart, I have taken, 1 second. Hello? Hello? Huh? मेरे को थर्मोमीटर तो नहीं चाहिए था. इसमें
एक मिनट, sorry. Once you have received this interest of term loan, then next part is arrived at margin money for working capital and what much of CC limits you can get. I will show you. I have prepared this margin money for working capital. Generally, bank give you sanction of 75% of your stock and book dates or of your net current asset. They will fund you 75%. I have done for 1 month, finished goods for 15 days, process is 7 days, और my debtors उधार का सेल जो है वो 3 महीना की उधारी देना. This figure may be changed, and I have taken 25 investment I have to make to audible. So I think some internet connection is. Hello, am I audible? Yes, sir. Very well. Yeah. Okay. Nice. I'm getting one message. There is internet connection problem. 1 second. I'm back. Sorry, थोड़ा disturbance था internet का. Now, I have derived at what kind of investment I have to make towards this current asset, raw material, finished goods, debtors, goods in process, and say I have assumed that 2 महीने की उधारी मुझे भी मिलेगी raw material पे. I have derived of what kind of credit I will get, and based on that, I have derived at what will be my total working capital investment, net current asset, and 75% of that is funded by bank, and rest I have to fund, that is margin money required. This margin money should be my part of my project cost, otherwise there will be garbad. These estimates you must take into your project cost. This has to be funded by your promoters only, but while arrived at cost of project, you should include this margin money for working capital as a part of project cost, so that your promoter or your client know upfront कि भाई इतना पैसा मुझे और भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जब मेरा सेल्स वगैरह सब चालू हो जाएगा. If you see from this margin money for working capital sheet, I have taken working capital margin, automatic formula दिया हुआ है 6.20. This arrived at as a part of project cost. And now what is my step? Let's see. I have prepared this working capital for margin money sheet. Margin money will be part of project cost into cost of project, arriving at working capital limit. Step 7, complete interest workings in working result sheets. Now from these I know कि what is my working capital requirement. I have arrived at कि first year मेरे को 18 करोड़ रुपया working capital लगेगा, second year लगभग 26 करोड़ लगेगा, third year मेरे को 29-30 करोड़ रुपया लगेगा. Now based on this, say average utilization, आप assumption ले लो 90% of these limits will get utilized, and your interest rate multiply करके we will arrive at every year what will be my interest outgo towards working capital, and that you need to put in your working results, which is here. Once term loan interest is there, now this is my working capital interest. Depreciation, if it is company, your client is a private limited or a limited company, then as per Companies Act, what will be your depreciation, you can work out. I have prepared that sheet, I can show it to you, but you can very well prepare what will be your depreciation. Whether if you are taking SLM or WDB, you put in your assumption and work out every year depreciation.
once your depreciation, you put these figures over here, then you arrived at profit before tax. If you see my preliminary expenses, I have assumed that it will be 50 lakhs. So generally it has to be written off in 5 years. So I have written off in 5 years. Based on that, I have received now profit before tax. The sheet is getting lengthy, so I have divided into two parts. This is second page, profit before tax. Then you can arrive at provision for tax. You can prepare sheet for provision for tax. I have prepared this kind of sheet. See, प्रोविजन फॉर टैक्स का मैंने शीट बनाया इस तरह से. No, in this case I have taken directly, sorry. But you can prepare very well this kind of sheet कि आपका income tax का कितना provision आएगा based on current tax rate, and you can provide for what will be taxation, this profit after tax. Then I have added depreciation and preliminary expenses, so I know my net cash accruals. I know what is operating profit. This is operating profit divided by sale. Net profit divided by sale is become my net profit ratio. What is my interest outgo and what is my cash flow. Based on that, I have arrived at interest and cash flow. What is my net worth and what is my debt portion. Based on that, I have arrived at my debt equity ratio. These are the ratio bankers will ask or bankers need to assess your project. And fixed asset coverage ratio, fixed asset divided by term loan. So these are smaller things. You have to have a direct formula so that you can get those things. And DSCR I have to prepare. I will show you how I have prepared this DSCR ratio, debt service coverage ratio. Up to this level, I think everything is clear. Now see what are the steps I am asking. टर्म लोन चार्ट हो गया, वर्किंग कैपिटल मार्जिन हो गया, टर्म लोन चार्ट अराइव इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट, सॉरी, depreciation as per Companies Act, as per Income Tax Act, complete income tax working. Now, once you have done with your depreciation, income tax working, term loan, interest loan, then you have to prepare a cash flow statement. Cash flow is very easy. I will show you how I have arrived at cash flow. One I have prepared. This is the cash flow statement. Now, see your whatever your means of finance become your sources of funds for your cash flow statement. Very simple. तो आपने मीन्स ऑफ फाइनेंस जो लिया था वहां से फिगर ले लिया भाई, शेयर कैपिटल कितना आएगा, टर्म लोन कितना आएगा, वासी इक्विटी कितना आएगा. एंड फ्रॉम माय वर्किंग रिजल्ट्स आई नो तो कभी करते ही नहीं. Now, this is cash flow statement. From my means of finance, I have taken sources of funds, share capital, term loan, quasi equity, and this is my profit before taxation working result से लिया with interest. Working capital मुझे मालूम है 18.60 margin money for working capital से लिया. Depreciation, because this is cash flow statement, so I have to non-cash expenses I have to add back. I have added back depreciation, profit and preliminary expenses written off. Now, what is my means of finance? Means of finance is my cost of project in first year. So I have disposition of funds. This is my, as per my cost of project, this is my fixed assets. This is my preliminary expenses. This is
मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल में मुझे मालूम है कि मेरा व्हाट विल बी माय नेट करंट एसेट, तो आई हैव टेकन दिस नेट करंट एसेट। फर्स्ट ईयर रिपेमेंट नहीं था, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स टर्म लोन चार्ट के रिपेमेंट से मैंने ले लिया इक्वल रिपेमेंट। देन since profit before taxation with interest added back has been taken in sources of fund, तो disposition में आपको I have to show towards interest repayment कितना होगा। term loan, working capital loan is the interest repayment. This is my tax obligation. I have assumed zero dividend, but if there is dividend, so you have there will be outgo towards dividend. And based on that, I have arrived at कि year end में मेरा cash flow, cash surplus क्या बचेगा। Once this cash flow statement is ready, then you can very well prepare balance sheet of fund, because sources of fund become your liability side and uses of fund your asset side. What I have done, share capital कितना invest हुआ, कितना unsecured loan, then reserve and surplus the first year जो retained profit है, if you see this is my retained profit 1.98, and capital ऑटोमेटिकली एवरी ईयर वो रिपीट हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो देयर विल बी नो चेंजेस। अनसिक्योर्ड लोन आई हैव केप्ट एज इट इज, बट हियर यू कैन शो एनी काइंड ऑफ रीपेमेंट इफ यू हैव वेरी गुड कैश फ्लो, देन यू कैन शो सम रीपेमेंट ओवर हियर। कैश फ्लो में आप रीपेमेंट दिखा दो तो ऑटोमेटिकली लिंक कर दो, यहाँ चेंज हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस फ्लो क्यूमुलेटिव फिगर बैलेंस शीट में आएगी, तो क्यूमुलेटिव फिगर आ गया बैलेंस शीट में। मुझे मालूम है मेरा टर्म लोन कितना है, फर्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग इतना है, देन things are getting repaid, working capital loan first year, second year, third year अपने को मालूम है। उसके बाद for working purpose, for this sheet purpose I have taken constant the same figure, but you can change this, you can enhance 5% or 10% every year। Sundry creditors, I know what will be my sundry creditors from my margin money for working capital। And now application of funds, fixed assets I know, depreciation I have arrived at, so I know my net fixed assets। इन्वेंट्री, सन्डी डेटर्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस कैश फ्लो से आ जाएगा। इन्वेंट्री, सन्डी डेटर्स, मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल से आ जाएगा। एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ होने के बाद जो बैलेंस बचा है वो यहाँ आ जाएगा। ये एक्चुअली फॉर्मूला में चेंज करना चाहिए, 10-10 लाख से कम किया है, एक्चुअली 53 लाख है। आई कैन चेंज 10 के जगह 10.60 से रिपेमेंट होना। एनीवे फॉर वर्किंग पर्पस लेट इट बी देयर, but those things change। and if you see now balance sheet is tally। one more important sheet which we need to, two more important sheet which I need to prepare is DSCR ratio and break even analysis। DSCR ratio is very simple, I'll show you। this is my net cash accruals while working out working results। I know my net cash accruals, I have added my interest on term loan, there no need to add CC, ओनली टर्म लोन इंटरेस्ट एडेड बैक। सर्टेन बैंक्स आस्क यू नहीं आप सीसी भी ऐड करो, तो आपको सीसी ऐड करना है, इंटरेस्ट पोर्शन पूरा का पूरा ऐड करना है। देन यू गेट रीपेमेंट, यू नो कि आपको 6 साल में रिपेमेंट करना है, पहला साल रिपेमेंट नहीं करना है। देन इंटरेस्ट तो ऊपर जो लिया वही नीचे लेना है। एंड यू अराइव्ड ऑफ योर DSCR एंड एवरेज DSCR, जो भी 6 साल का जितना साल तक का टर्म लोन है उसका एवरेज का फॉर्मूला दिया, तो मेरा एवरेज DSCR भी arrived हो गया। One, this sheet is very important, DSCR, and another sheet important is break-even analysis। break-even analysis generally project report में third year का ही किया जाता है, because by the time you arrived at working at your full capacity, it is assumed that by third year you will arrive at there will be no volume growth, whatever growth third year onwards will come will be price growth। So I have arrived simple, we have learned during our accountancy course, CA account chartered accountancy course, how to arrive at break-even point। I have taken my third year sale, all those formula given, third year का sales यहाँ copy कर लिया है, variable expenses जो है वो यहाँ डाल दिया है, and then I arrived at my contribution, PV ratio, and I know what is my fixed cost, and based on that I have arrived at my break-even point, cash break-even value, and break-even point and cash break-even point। These are basically 17-18 सीट है, तो नॉर्मल छोटे मोटे प्रोजेक्ट 10-20 करोड़ के लोन के लिए इतने ही सारे शीट अपने को देना पड़ता है, एंड दैट इज मोर देन सफाइस। ओनली थिंग इज दैट जो भी फिगर जहां से भी ला रहे हो, चाहे वो सैलरी हो या पावर एंड फ्यूल हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट में, सारे आपकी वर्किंग्स आप
आपके पास रहनी चाहिए हाउ यू अराइव दैट। अगर सिंपल क्लाइंट ने बोला है नहीं 10 लाख रुपया पर मंथ पावर लगेगा, तो आपको एजम्पशन में लिखना है 10 लाख रुपया पर मंथ, इट इज एज्यूम दैट पावर फ्यूल कॉस्ट विल बी 10 lakhs पर मंथ इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इतना, थर्ड ईयर इतना, सो दैट जिसको आप दे रहे हो उसको आपको सब प्रोजेक्ट को समझने के लिए, बैंकर को प्रोजेक्ट को समझने के लिए बार बार आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में दिया है कि पावर एंड फ्यूल पर यूनिट सपोज 40 पैसा लगेगा, तो आप 40 पैसा पर यूनिट से कैलकुलेशन किया तो एजम्पशन में आपको डालना पड़ेगा। एंड थोड़ा बहुत अगर जितना आप डिटेल्ड वर्किंग करके रखोगे उतना ही बैंकर के सामने आप कंफर्टेबल रहोगे, बिकॉज जनरली टेक्नोक्रेट कम जाता है, बैंकर्स आर आल्सो नॉन टेक्नोक्रेट पीपल, तो दे वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम ए नॉन टेक्नोक्रेट गाय लाइक अस। तो आपको सारे डिटेल्ड वर्किंग रहेगा, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, उसकी प्रपोजल नोट बनाने के लिए उनको फायदा होगा, बिकॉज उसको भी ये सब प्रपोजल नोट में डालना पड़ेगा, भाई कितना पावर कॉस्ट आएगा, किस तरह से आएगा, तो ये सारे एजम्पशन उसको भी लगेंगे। तो ये सारे चीजें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक 17-18 शीट का बन जाता है, एंड ये डायनामिक प्रोजेक्ट शीट बनता है। आई विल शो यू हाउ डायनामिक इट इज। से फॉर एग्जांपल in my production sales statement, I have taken 60%, 70%, 80% capacity utilization, and based on that I have arrived at this kind of sale figure and some kind of DNS. If I change कि नहीं भाई हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% ही होगा, यहाँ 60% होगा, यहाँ 70% होगा, तो ये देखिए आपका नीचे सेल्स फिगर भी चेंज हो गया, आपका बैलेंस शीट फाइनली इट शुड बी टैली, बिकॉज आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट चेंज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फिगर चेंज हो गया, तो योर बैलेंस शीट टैली। तो अकॉर्डिंग मतलब दिस शीट शुड बी सो डायनामिक, you do whatever changes you want to do, permutation, combination, your project report, balance sheet will get tallied, cash flow will be prepared, and you see even my DSCR calculation also got automatically changed. Earlier I think 3.19 आया था, जैसे ही मैंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेंज किया it becomes 2.56 average. Now say you want to change maybe ओवरऑल कैपेसिटी चेंज करना चाहते हो, मे बी यू वांट टू चेंज योर सेल्स प्राइस, भाई 500 नहीं मिलेगा, आप 480 मिलेगा, तो मैंने 480 कर दिया, ये 620 कर दिया, तो आप देखो वापस सारे फिगर चेंज हो गए, ऑटोमेटिक चेंज हो गए, एवरीथिंग इज क्रॉस लिंक and your balance sheet is tallied. Whatever changes you want to do in your project report, you should prepare this kind of spreadsheet so dynamic कि आपको क्लाइंट तो क्या बोलेगा, चेंज करो, 5% रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ाओ, 5% सेलिंग प्राइस कराओ, या ये चेंज करके बताओ क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि कंपोनेंट है आपके प्रोजेक्ट नॉर्मल वर्किंग कॉस्ट के, किसी में पावर इज मेजर कॉस्ट, किसी में लेबर इज मेजर कंपोनेंट, किसी में रॉ मटेरियल मेजर कंपोनेंट, किसी में सेलिंग प्राइस इज की फैक्टर, हाँ, बिकॉज ह्यूज कंप्यूटेशन, सेलिंग प्राइस में आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सीट है ये इतनी डायनामिक होना चाहिए कि आपको हर चीज वापस जाके बनाने की जरूरत नहीं है। ऑन क्लिक ऑफ ए बटन योर प्रोजेक्ट शुड बी गिव यू डिफरेंट डायमेंशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, एंड once this kind of dynamic sheet is prepared, then you can do sensitivity analysis. Simple, by 5% raw material cost बढ़ा दिया, 5% सेलिंग प्राइस कम कर दिया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, whatever changes you want to made in permutation combination, you will get summary of all those things. break even point क्या हो जाएगा, क्या changes DSCR में आ रहा है, कहीं नॉन वायबल तो नहीं हो रहा है। So this will help your client or banker to decide whether to go ahead, whether to sanction this kind of project things. By this, I am end of this session. I will share all those Excel, PPT, and project details file to WIRC email, Navi Mumbai branch email ID, and from there, as a participant, you can share your email ID and collect it. Meanwhile, I am sharing my number on the screen.
And these, all those things, balance sheet, cash flow, how you want to prepare, I have detailedly explained kahan se kya figure lena hai. So understanding of that Excel sheet will be very easy for you. Once you go through, you can prepare on your own. हो सकता है शुरू में 2-3 में आपको समय ज़्यादा लगे, but once you prepared 5-7 this kind of project report, then it will be very easy for you. It's a matter of 30-40 minutes. You can prepare the entire sheet of 20 to 23 pages. I have explained all those things. Now what I'll do, thank you. My email ID is visible. Otherwise, I'll write it down over here. Yeah. Email ID is asawa.ca@gmail.com. We can see it, sir. Okay. And my mobile number is, if you can note down, or I can write it down, 1 second. What I have done over here. I have shared on my screen. This is my email ID. This is my cell number. You can call me anytime. If I am not picking your phone, then just leave a WhatsApp message introducing yourself so that I can call you back. But anyway, your branch office bearers, chairman and branch email ID, I will share those things. Excel sheet